Friends, welcome to this exciting new initiative of CMAI. आप लोगों को शायद आप नोटिस करते होंगे कि काफ़ी सालों तक CMAI एक नेशनल गारमेंट फेयर के लिए ही फेमस था, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ महीनों से काफ़ी नए नए एक्टिविटीज़ CMAI लॉन्च कर रही हैं और इन नए इनिशिएटिव्स में शायद ये जो हम अभी करने जा रहे हैं, जो एथनिक वेयर के फैशन फॉरकास्ट is probably the most exciting of the new ventures or initiatives that we are starting off. आपने शायद ख्याल किया होगा कि हमारे इंडस्ट्री में जो भी हम फैशन फॉरकास्ट देखते हैं, जो भी जिनके बारे में सुनते हैं, they are all based on the European fashion. WGSN आप ले लो और कई सारे ले लो. इवन जो इंडियन बॉडीज जो फॉरकास्ट करते हैं, दे आर ऑल्सो टोटली डिपेंडेंट ऑन दी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स एंड वेस्टर्न फॉरकास्ट. तो वी वर ऑफ द ओपिनियन के हमारे जो इंडियन मार्केट जो है, उनके जो कलर्स हैं, उनके फिट्स हैं, उनके प्रिंट्स हैं, वो काफ़ी अलग होते हैं और हो सकते हैं. तो तभी हमने जब पूछताछ की तो बैंगलोर की ये एक स्टार्टअप कंपनी में, शायद स्टार्टअप तो नहीं कह सकूंगा क्योंकि 2-3 साल हो चुके हैं उनके, और बट फिर भी एक बहुत ही यंग और एक्साइटिंग ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के साथ हमारी मुलाकात हुई और हमने देखा कि ये एक प्रपोजल ऐसा है कि एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि हमको बैक करना चाहिए. तो CMAI के मेंबर्स के लिए हम लोग ये एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, जो बेसिकली हमारा जो एथनिक वेयर है, घाघरा चोलीज हैं, सलवार कमीज हैं, साड़ीज हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स के अगले सीजन्स में क्या फॉरकास्ट रहेगा, किस टाइप के कलर्स पॉपुलर रहेंगे, किस टाइप की फिट्स चलेगी, किस टाइप के प्रिंट्स इंट्रोड्यूस होंगे. तो ये हम लोगों ने एक कोशिश की है. अगले आधे घंटे में हम लोग इनसे सुनेंगे ICH नेक्स्ट से कि उनका ये प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट क्या है. आज का जो वेबिनार है उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को हम दिखा सके कि ये प्रोडक्ट किस टाइप का है. अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, परचेज करते हो, उनके जो रिपोर्ट्स जो है वो परचेज करते हो, तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको क्या डायरेक्शंस मिलेगी, उनका क्या कॉस्ट होगा. और हम तो जब हम पहली बार अनुराग जी और कनिका जी से मिले, हमने उनको ये कहा कि भाई हम फैशन लीडर्स तो हैं, लेकिन बनिया लोग भी है, सारे धंधे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, तो हमें फ़ायदा क्या होगा वो हमें आप बताना चाहिए. तो जो CMAI के मेंबर्स जो रहेंगे, उनके लिए बहुत ही एक अट्रैक्टिव पैकेज हमने तय किया है, जो मेरे ख्याल से कनिका मैडम या अनिरुद्ध जी कुछ बताएंगे आपको. बट ऑल आई कैन से इट्स अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव पैकेज. काफ़ी कंपेटिटिवली प्राइस हुआ है और उसमें भी CMAI मेंबर्स के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. And more than anything else, I am very excited about the new product which they are going to show to us, and we are proud to be associated with ICH Next, and we are looking forward to a partnership which will give a lot of benefits to our members. So over to you, Kanika.
Thank you, Rahul ji. Thank you so much for your kind words, and we are equally excited about this partnership. हमें भी लगता है कि हम लोग इकट्ठा बहुत अच्छा काम कर पाएंगे आपके साथ. Okay, so good afternoon, everyone. Starting on what we would like to show to you. First of all, okay, let me also thank CMAI in whole. Rahul ji, आपके साथ साथ CMAI, Ashok ji, Jinesh ji, thank you so much for joining us here. Again, very excited about this opportunity. What we would essentially like to do now is present the forecast to you. But before we do that, I want to give you a little bit of an introduction on who we are. कनिका जी, अगर आप थोड़ा बहुत हिंदी मिक्स कर ले. हाँ हाँ, जरूर जरूर. मेरा ओके, शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम अपने बारे में देना चाहेंगे. दिस फोरकास्ट इज बॉट टू यू बाय एच क्रिएटिव कंसल्टिंग. बहुत छोटी फर्म है. इसमें हम दो पार्टनर्स हैं. मैं हूं कनिका बोरा, मेरी पार्टनर अनुराधा चंद्रशेखर. हमारी कंपनी तो नई है, मगर हमारा एक्सपीरियंस काफी एक्सटेंसिव है. कंबाइंड एक्सपीरियंस हम दोनों का मिला के आज 40 साल अब हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए. इसमें हमने बहुत लोगों के साथ काम किया है. हमारी जो वर्किंग टेन्योर्स थी, दैट वाज विद अ लॉट ऑफ रिटेलर्स, सम ऑफ द लीडिंग कॉर्पोरेट्स. बट इच शुरू होने के बाद से भी हमारा जो क्लाइंट रोस्टर रहा है, उसमें आप देख सकते हैं जो हमने स्क्रीन पे डाला. वीव हैड द गुड फॉर्चून ऑफ वर्किंग विद सम ऑफ द some very good companies, as what you can see, between an Amazon to Tata's, to working with the Birla Group. We've been lucky on this front. मगर बात ये थी कि इन सबके साथ काम करके, इन द years that we have been working in this industry, one thing was very apparent, and again I'm going to say the same thing जो अभी आपको राहुल जी ने भी कहा था कि है यहाँ पे, मतलब ट्रेंड गाइडेंस अवेलेबल है, मगर वो इंटरनेशनल है. ऐसा कोई प्रोडक्ट इंडिया में नहीं था which was centered around reading the Indian sentiments, जो इंडियन कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ के आगे गाइड कर सके कि भाई कौन सा ट्रेंड आने वाला है. And this was the gap that we saw, and this was the gap that we thought was something that we needed to work in. तो यही हमने किया है. इसी के लिए हमने एक नया प्रोडक्ट चालू किया है. और हम लोग अकेले नहीं हैं. अनु और मेरे साथ हमारी काफी अच्छी लंबी चौड़ी टीम है. आप देख रहे हैं मेरियन यहाँ पे हमारे साथ पैनल में है. शी इज वन ऑफ आवर प्राइमरी डिजाइनर्स, एंड काफी बड़ी टीम है और ग्रो भी कर रही है टू मेक श्योर दैट वी हैव नुआंसेस कैप्चर्ड फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. एंड एज वी ग्रो दिस, वी विल मेक श्योर दैट वी हैव मोर एंड मोर पीपल रिप्रेजेंटिंग. ओके, सो नाउ हियर्स अ लिटिल बिट अबाउट द प्रोडक्ट. हमारे हिसाब से इंडिया में पहली बार ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट प्रेजेंट करी जा रही है, विच इज एन एथनिक वे ट्रेंड फोरकास्ट एनालिसिस. एंड इस प्रोडक्ट की खूबी ये है कि ये बहुत ही आसान है पढ़ने में, और उससे भी ज्यादा आसान है अडॉप्शन में. और किस तरीके से इसको अडॉप्ट करा जाएगा इज समथिंग दैट वी विल कवर इन द लेंथ ऑफ दिस वेबिनार. दिस इज प्राइमरली मेंट फॉर पीपल हु वांट टू बी definitely on trend and who want to get the product right. मतलब कोई ट्रेंड को कुछ छूट नहीं जाना चाहिए और ऑन ट्रेंड सबको होना चाहिए. मगर सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. हमारा सबसे बड़ा ये था कि जब देखा जाए कि ट्रेंड को पकड़ा कैसे जाता है, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डिस्प्यूट दिस कि सिर्फ एक रिसर्च ही ऐसा माध्यम है जिससे सब कुछ बहुत थरली जाना जा सकता है कि क्या आगे आने वाला है. मगर अगर lot of us have been in the industry for a very long time, and very often we know what is going to work for us. हमारी गट हमारे को बहुत हेल्प करती है. मगर अगर देखा जाए, गट के ऊपर है रिसर्च. रिसर्च सबसे बड़ी चीज है जो बता सकती है कि अब क्या आने वाला है, क्या चल रही, क्या किसकी बात की, किसके ऊपर चर्चा हो रही है, क्या लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या ट्रेंड है जो अभी चढ़ने वाला है और क्या ट्रेंड है जो पीक करने वाला है. एंड दिस इज वेयर वी कम. एक और ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि हर कंपनी में जो डिजाइनर होता है, मतलब एवरी कंपनी हैज इट्स ओन डिजाइन टीम, तो उनको इस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़े. ये भी है कि एक डिजाइनर के पास हमेशा बहुत काम होता है. एक डिजाइनर को मतलब उसको अपनी रिसर्च करना है, रेंज बनानी है, प्रोटोटाइप बनाना है, प्रोडक्शन में डालना है, काम बहुत होता है. एंड वक्त की कमी ऊपर से काफी ज्यादा होती है. और वैसे भी एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि इतने सारे
पॉइंट्स को रिसर्च करके समझे कि क्या ट्रेंड है जो आने वाला है. So this is again where we come in. हमारा purpose, our reason to be is to aid and abet not just the designers, of course the designers, but the business in understanding what are the trends that are coming in. So that is the primary reason that we are here. And it is for design and business to work together. मगर अब आप देखिए सिनेरियो कैसे होगा अगर बिगनिंग ऑफ द सीजन में ही आप लोग अगर जान जाएंगे कि ये ट्रेंड है जो आने वाले हैं. As a company, it's completely possible to sit together and decide कि भाई as an organization मैं इस ट्रेंड को बैक करूंगा. और उस वक्त फिर पूरी अलाइनमेंट हो जाती है. मतलब आपकी बिजनेस की अलाइनमेंट है, आपके डिजाइनर की अलाइनमेंट है, सारी टीम्स की अलाइनमेंट है कि भाई देखो ये ट्रेंड है जो हमारी कंपनी बैक करेगी और इसको बड़ा करेगी और इससे हमारा ब्रांड आगे बढ़ेगा. एक और फायदा आपको हमारे साथ काम करने का होएगा विच इज गोइंग टू बी रैपिड फ्रेशनेस. हम आपको अपना कैलेंडर दिखाएंगे और ये हमारा वादा है थ्रू द ईयर हमारी मार्केट की रीच जारी रहेगी और जो मार्केट की रीच जारी रहेगी उससे हमारे ट्रेंड्स आते रहेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी राउंड द ईयर एंड यू विल हैव फ्रेशनेस राउंड द ईयर. And because this is so easy to adopt, मतलब ये आप देखेंगे कि कितनी जल्दी से कलेक्शंस बन सकती हैं. It will save you a lot of time. रिसर्च पूरी हो गई होगी, आपके पास ये सारी मोटिव्स, आपके सिलुएट्स, आपके कलर्स सब जब तैयार होंगे, you will be able to work much faster in being able to take your product into the market. तो ये 4 फायदे तो पक्के हैं. एंड क्योंकि हर एक ट्रेंड जरूरी होता है एंड आपको कोई भी ट्रेंड मिस नहीं करना. अच्छा, ये हम लोग करते कैसे हैं? बिफोर वी डू दैट आपको थोड़ा सा और हम लोग बिफोर वी शो यू द रिपोर्ट थोड़ा आपको और बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हम लोग ये पूरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठे करते हैं. तो हमारे हिसाब से हर टच पॉइंट जो कंज्यूमर को इफेक्ट करता है वो बहुत जरूरी है. स्टार्टिंग विद कंज्यूमर सेंटिमेंट. अब ये एक ऐसी चीज है जो क्या मूड बन रहा है वो उसके लिए हम लोग काफी पढ़ते हैं. हम लोग काफी we listen to a lot of conversation in the social media. We read a lot of the articles that get published and we speak to a lot of people to first understand what is the consumer sentiment that is building. Because बहुत जरूरी है समझना कि कस्टमर को चाहिए क्या और वो भी इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए. वो उससे हमारी रिसर्च हम लोग चालू करते हैं. उसके बाद हम लोग सारे पॉइंट्स देखते हैं, चाहे वो बॉलीवुड हमारे स्पेशली इन एथनिक वेयर इज अ वेरी मेजर इन्फ्लुएंसर. हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते. इनफैक्ट वी कीप अ वेरी वेरी क्लोज वॉच ऑन कि भाई हमारे बॉलीवुड में मूवीज में हमारे सेलिब्रिटीज पहन क्या रहे हैं, हमारे मूवी स्टार्स पहन क्या रहे हैं. सिमिलरली ग्लोबल रनवे, टू एज्यूम कि भाई ग्लोबल में जो हो रहा है हमारे को इफेक्ट नहीं करेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू. ग्लोबल रनवे इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड हेंस इट हैज टू बी चेक्ड. सो आर द इंडियन डिजाइनर्स, so are the social media influencers. अब बात यहां तक आ गई है कि Instagram में, I mean social media में, you will find people who have a following anywhere between 10,000 to 10 lakhs. मतलब 1 मिलियन की फॉलोइंग है लोगों की. एंड ये लोग जो हैं ये बिल्कुल डिटर्मिन करते हैं कि भाई क्या आने वाला है, बिकॉज उनकी जो वो लाइक करते हैं और जो वो जिसके बारे में बात करते हैं वेरी ऑफन दैट डज बिकम द ट्रेंड, बिकॉज उसको वो एक्सेप्टेंस मिल जाती है उस ट्रेंड को. तो हम इसको सोशल मीडिया की पोस्ट को भी हम अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हैं, ब्लॉग्स को इंक्लूड करते हैं, लेबल्स को इंक्लूड करते हैं, फैशन रिटेलर्स, पॉपुलर मैगजीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये करके हम अपनी ये रिपोर्ट तैयार करते हैं और हमारे हिसाब से 400 से ज्यादा सोर्सेस का रिसर्च, उनका अध्ययन करके हम अपनी ये रिपोर्ट को निकालते हैं. एंड निकालते भी ऐसे हैं कि इनको निकाल के फिर इनको हम लोग इनकी कॉमनैलिटीज को, जो हमको लगता है कि जो ज्यादा जिन चीजों में आवाज आ रही है उसको एनालाइज करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, उसको फिल्टर करके निकालते हैं कि भाई किस टाइप के ट्रेंड है जो लोग बात कर रहे हैं. उनको एक स्केल के ऊपर डाल के हम लोग चेक करते हैं क्या ये ट्रेंड्स माइल्ड है, वार्म है, हॉट है, क्या है ये ट्रेंड्स. एंड देन वी लुक एट व्हाट इज स्टार्टिंग, व्हाट इज बिगिनिंग टू राइज, व्हाट इज पीकिंग एंड व्हाट इज डिक्लाइनिंग. इस रिपोर्ट में हम लोग ट्रेंड्स को इंक्लूड करेंगे, द वंस दैट आर राइजिंग एंड द वंस दैट आर पीकिंग, क्योंकि कमर्शियल बिजनेस उसी से आता है. So this is the way that we go about doing this. So what do you get? You get 300 pages of trend inspiration, 10 capsule stories, pattern ideas and editable motifs. ये सब की डिटेल जो है अभी आपको अनुराधा रिपोर्ट में बताएगी.
And hence, it's a complete library that we release to you over many releases in the year. Over to Anuradha. She will now take over and show you the report. Good afternoon, everybody. हम एक बात बोलना चाहेंगे कि प्रश्न और इस पे ऊपर जो भी आपके क्वेश्चंस उठेंगे आप टाइप करते जाइए and at the end of the presentation we'll be answering all the questions. In fact, our team is here, they're making a note of the questions and we will be taking up all of them once the presentation is over. Thank you. Good afternoon, everybody. This is Anuradha Chandrasekhar here, also a co-founder to Itch Next and Itch Creative Consulting. What I will be doing is taking you all through a demonstration and a glimpse into the festive winter 2022 forecast trends to get you all an idea of the depth and the expanse of what the report offers to you itself. Sorry, that is my notes. Yeah. So the report essentially covers all of these aspects. हम शुरू करते हैं consumer mindsets के, जैसे कानिका ने already बताया गया है. Understanding the consumer mood is very important because that helps us understand what trends they are going to get exposed to and what trends they will have an affinity to. We then also look at the fashion inspirations that are impacting the leading designers, which then helps us arrive at what are the larger macro themes जो हमारे हिसाब से are going to be very important for the season. What are the key trends across color, pattern, and motifs? और ये पूरा आपके एक पूरा library भी मिल जाता है, as we will show you ahead. And then, of course, covering fabrics and surfaces, the key details that go into the garmenting, and also the key silhouettes. So for the purpose of this webinar, we will be looking at some aspects to give you all a view of what the entire report entails. So starting with understanding the mood for the second half of the year and the sentiment that we believe is going to be prevailing for consumers itself. What we are calling it is greed is good. मगर ये पैसे वाला greed नहीं है. This is a greed for nature, a greed for green, a greed for culture and preserving that culture, a greed for creativity and innovation, a greed for friendship. For the last 2 years, we have all been closed, boxed in, and even afraid to shake somebody's hand. So there is going to be a want to connect again, a want to get out and indulge in everything that is good for us, good for our soul, हमारे सेहत के लिए. So the report starts off to explaining some of the key sentiments that especially have a very close connect to the way fashion is being adopted and fashion is being looked at for the season itself. Every season we cover anywhere between 5 to 8 sentiments depending on what is the mood of the market and where things are trending towards. For example, one of the key sentiments that we are looking at for festive winter is the concept of craving stability. I think हमको सबको पता है कि last 2 years में इतना volatile था, market volatile था, हमको पता भी नहीं था कि किस घर पे रह रहे हैं, are we renting, are we staying in our own house, are we with our parents, do our kids go to the school? There was so much of volatility that existed in our lifestyle itself for the last 2 years. And one of the key things that is going to be prevailing in consumers' minds is the want for stability, because stability से ही growth आता है, stability से ही हम आगे बढ़ सकते हैं. So this sentiment, very interestingly, actually transpires to fabric trends that are actually moving towards very stable fabrics, very structured fabrics, very opaque and dense fabrics, and not the typical sheer kinds that has been prevailing, from 2 years before. So it's an interesting way that the way fashion is imbibing this sentiment. Or even if you look at the silhouettes, it's about typically हमको पता है कि ethnic wear silhouettes में construction इतना ज़्यादा नहीं होता है. It's more simplistic silhouettes itself. But for this festive winter, we are starting to see a lot of constructive silhouettes, right? So whether it's the traditional paneled kalidar or whether it is the Western bodycon paneled seamed styling that is coming into ethnic kurtas as well. So it's interesting to see how consumers' sentiments also impact and therefore influence the kind of fashion trends that are coming into the season itself. Another one such sentiment is the love for Vastavik. I think all of us want real connection. All of us want real association. और ये हमारा जो दिख रहा है
consumers are wanting to get back into looking at their cultures, in connecting again with art, with music, with going back into museums and appreciating everything that is so real and so non-digital. I think those saal we have been so forced to be in the digital world, there is a want for reviving those connections that are more real itself. So ऐसे हर report में आपको ऐसे 5 या 8 consumer sentiments हम cover करते हैं, जो eventually fashion के sentiments भी impact करते हैं. We then also look at what's happening in our country, right? And what are the initiatives that are building and are becoming the conversation in our country? Especially आप सबको पता है कि इस साल तो marks the 75th year of independence itself. And there are a lot of promises that we've got going, a lot of initiatives that are being driven to the progress of this country. And we have focused on those that have a very direct impact on the fashion, either on the fashion consumption by the consumer or on the fashion influences that the design fraternity is starting to pick up and hence influence the rest of the market as well. Just to give you an example, जैसे कि आप कश्मीर को ले लो. Just in the last year, Kashmir has seen the maximum number of tourists that it ever saw, combining 7 years prior. So that is the extent of exploration that has happened of Kashmir, and that has had a very direct impact where there is a want for revival and appreciating everything that Kashmir has to offer for its arts, crafts, and culture, and exposing it to a much wider audience. And we're seeing a lot of very important key designers starting to pick up these trends and imbibe them into their collections. And we believe that will transcend into even mainstream fashion. ऐसे हम ये प्रेरणाएं भी देखते हैं कि जो डिजाइनर कम्युनिटी है उनको क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, to understand the background by which they are imbibing or moving towards a certain trend direction. ये बहुत important होते हैं because if you look at the natural transcendence of trend in our country, we know that it's Bollywood and celebrities and regional celebrities that end up becoming a very strong influence in the fashion adoption in the country. And they end up imbibing what the designer fraternity is also promoting as well. So it's important to understand कि उनके background की क्या है, why are they talking about something, on what basis are they picking up a certain trend, so that we can explore further from it and we can understand what will impact the mainstream market as well. फिर हम कलर्स की इंस्पिरेशन की भी देखते हैं कि क्यों ये कलर्स क्यों ट्रेंड कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं, एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, राइट? सो जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट मूव्स फॉर द ईयर ऑफ 2022 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिजर्वेशन, right? Investing in anything that preserves us with everything that we have lost on health or wealth or any of those sorts, the want to sort of preserve everything that is good for us. And for fall winter 22, we actually see indigenous foods being an inspiration of जो हमारी देश के important या फिर traditional foods है, that becomes a form of inspiration itself, whether it is honey in its liquid form or sandalwood or the green of tea. So various things like that become actually inspiration for the color seasons as well. Similarly, whether it's medicinal, one of the biggest other focus is the whole concept of bioorganic chemical structures that will sort of be for our goodness and our wellness for the near future. I think health has become everyone's importance itself, but the want to be able to make this less daunting or less scary and more acceptable in its things. And we're seeing the colors that are coming through in the medical profession being a lot brighter, a lot happier, and that impacts. या फिर आप luxury की भी देख लो. Of course, traditionally luxury has always been associated with jewel tones, or especially given this is festive winter, ये automatically बहुत fit होता है, and it makes sense to sort of look at this as well. So ये सारे color inspirations imbibe into a color library, which includes also the Pantone references, ताकि आप अपने collections बनाने के समय आपको direct तुरंत यहीं से उठा सकते हो. So now, since we've understood the background to where a lot of the influences are coming in on the trend, we've understood why something is happening, what consumers are feeling, what is influencing a certain trend or a certain inspiration itself, we arrive at the 3 macro themes for the season, right? That are going to be extremely important. And we look at all the micro trends that exist under these macro themes. So is webinar ke liye, we're going to deep dive into one such theme, which is museum. So museum essentially talks about
a focus on the northwest region of the country, which is essentially Kashmir, Rajasthan, and Gujarat. And by the name museum itself, it really tries to represent the arts and crafts of this country in a very museum preserved kind of quality, in its absolute glory, in its absolute truth itself. Because क्या हुआ है पिछले 10 सालों से, in fact 10-20 सालों से, there are some crafts that have become so mass dominated and mass available, it has lost its sense of appreciation. जैसे आप बंधेज देखो या फिर अजरक देखो, इतना ज़्यादा mass adoption हो गया है that people are not appreciating it anymore. So there is a want to revive that in its true glory, in its intricacies, so that people can start looking at it, at the beauty of the art behind it, and not just the technique as well. Another aspect is that on the other extreme, you have the underexplored craft. So whether it's the Artibal designs of the Kashmiri style, or whether it's the Kashida Kari, the underexplored arts are also becoming a very important focus for this season of museum itself. So every macro theme covers the key colors and then the key patterns for the season, and of course has its own library of motifs as well. So हम पहले देखते हैं कि colors, what are the colors for museum for this festive winter, which essentially focus on preserving the cultures of the Northwest. So before I go on to explaining the trend or presenting a couple of the color trends for this theme, we think it's important to understand हम ये colors क्यों ऐसे represent करते. हमारे मुताबिक colors कभी isolation में trend नहीं होते. They never trend in isolation. They always trend in combination. Colors, a lot of the key colors continue season on season. ऐसा नहीं कि mustard only is coming for this season in its honey form. It's a color that always comes in, especially during festive winter. But it's important to understand कि उस combination क्या है, and that's where the freshness comes in. The color combination of the trend itself. Secondly, we also believe that colors always trend in a certain form. कि किस टाइप के फैब्रिक में होनी चाहिए, किस टाइप के प्रिंट्स में होनी चाहिए. It's very important to understand how to adopt the color. But very often you will notice that brands or designers adopt a color trend that is not meant to be in its right form, and that's where they go wrong on it. So इसीलिए हम अपने color codes इतने image rich करते हैं ताकि आपको visually पता चले कि ठीक है, these colors are supposed to happen in these kind of fabrics, in these kind of prints, and in this manner of combination. So जैसे इस festive winter में honey and light, honey is a very important color. Globally भी honey is an extremely importantly forecasted color itself. But the way ethnic wear is imbibing is that it is being softened with a light peach, as you can see, and it's getting embellished with a light gold for, to be true to the season of festive winter itself, to bring in a certain freshness, to bring in a certain newness. या फिर looking at the northwest region, desert sand becomes a very key color, but it gets cooled down with gray tones and creates a very new and very interesting combination, again getting embellished with white golds in its treatments itself. Or the Gulmohar red, in both its rich, bright, blooming tones and the more wilted, deeper versions. Or royal berry, but being hyper contrasted with an azure blue. Now, if you notice here, it's not that the blue and the berry are being treated in equal form. So इतना देख के समझ आ जाना चाहिए कि ठीक है, blue is supposed to be a contrast, it's a hint, it's an accent, and the treatment is done such that. Hence, the boards are always very image rich. And again, आपके सारे colors Pantone reference के साथ है, so आप यहीं से चुन के अपनी collections बना सकते हो. Or lastly, in the theme of museum, the color concept of black positive. Now, abhi हमको सब पता है, तो black is a very classic color. It's a non-seasonal color. It's always there. But it's important to understand how black is coming in as trend for the season. How is it being adopted? जैसे festive winter में we're seeing black in a positive tone because it's getting contrasted with a white, but white working in treatments like a negative space. So the patterning becomes very important in the way the black is treated. So like this, across the three themes, you have a whole host of color trend ideas and color trend combinations that are important to the season. And with it, the entire color trend library as well that's available to you. अब हम देखते हैं कि patterns कैसे बन रहे हैं museum की theme में, right? So going with the same concept of preserving cultures of the Northwest, the pattern direction for museum actually picks up on both
the very popular crafts and looks at it in a very, very intricate manner, or it picks up the underexplored crafts of Kashmir and gives it in a very contemporary and a more easy to adopt to the modern sensibility manner itself. So जैसे आप अजरक लीजिए, of course, you know, अजरक is such a popular craft, but if you see the trend that's being forecasted within it is in a very engineered form. It's a very multi-layered, very detailed, so that it gets its full glory of what the trend itself is. Before I continue, I do want to let everybody know here that every pattern that is offered and that you all can see here are original creations by Edge Creative, and they are available in an editable form to anyone who's subscribing, so that they can actually take the pattern and edit it, but must edit it, all right? Because these are inspirations, ताकि अपना pattern unique हो जाए अपने लिए. So, but it's available both in an EPS and in a PDF version, ताकि वो कोई भी software में खुल जाएगा, whether it's Adobe Illustrator or it is Adobe Photoshop or CorelDRAW, so that you can easily edit it. आप colors change कर सकते हो, borders change कर सकते हो, और इनके सारे motifs भी मिल जाएंगे आपको, ताकि आप अपने खुद के नए patterns बना सकते हैं. Another key trend for festive winter is the bandage, but in a very patterned form. हम बहुत सालों से bandage, we have seen it in a very simple, very all over style of a single booty happening. But here we're starting to see it in a very patterned, very intricately treated, multi-layered sort of a styling. और हम इससे भी ज़्यादा देखें, we provide even recommendations on how you can further enhance a pattern. जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, आप कच एम्ब्रॉयडरी डाल के इसको और ज़्यादा enhance कर सकते हो इस pattern direction को. Reviving the artibal. So we are all familiar with the Kashmiri rugs. हमको सब पसंद है. You know, as a country, we are proud of the pattern and the intricacies of the Kashmiri rug. मगर उनमें से there is a specifically kind of pattern design called the artibal, which was actually done पुराने ज़माने में only for the Maharajas, और अभी के लिए तो सिर्फ museum के लिए बना जाता है, because it's very detailed, very, very intricate, and as you can see, it's got many layers to it. So we take inspiration from the artibal style of the Kashmiri rug and actually looked at a more contemporary styling to it, whether it's in the colors, in the combinations, and the way it gets treated itself. So this becomes a very new, very interesting treatment in the way you can adopt it, and various ideas in the way you can adopt it, including how you can further embellish it. जैसे यहाँ पे आप कशीदा embroidery डाल के, you know, इसको और enhance कर सकते हो और true हो सकता है इस particular region के trend के बारे में. Or the Kashmiri paper mache. We are all familiar, and we probably all own a curio from the state of Kashmir of these kind of paper mache styles, with its very unique shaded florals that in a hyper contrasted style. So this becomes a very interesting and a very key pattern trend that we've also seen some very key designers starting to adopt for the season itself, and we believe will have a very, very major impact, especially to the youth ethnic wear market in its strong, hyper contrasted, bright treatments itself. So हर theme के जो patterns मिलते हैं, आपको एक पूरा motif library मिलता है, not just the motifs you've already seen in the patterns, but over and above that as well. And these motifs are 100% royalty free. आप ऐसे ही use कर सकते हो. You can adopt it just like that, और खुद के pattern बना सकते हो. Whether it's an all over print, या फिर उसके एक border add कर सकते हो, या फिर आप engineered print बना सकते हो. So this is a complete library that's available to you that you can adopt and use how you want. अपने सहमत से अपने तरीके से adopt करके use कर सकते हैं. So across the themes, we provide therefore a huge library of pattern trend ideas. Again, all of these pattern, even though their inspiration, they're still available to you in editable form, ताकि आप download करके थोड़ा बहुत edit करके आप बना सकते हो अपने खुद के pattern, और इसके पूरे motif library भी है. And to give you an idea, we provide every year more than 200 original patterns like this and more than 1,000 motifs every year that comes to your inbox. And this is only the start. Once we've arrived at understanding what are the 3 key themes for the season, etc., we then look at the surface embellishments that are important, because this is not theme ke mudapik, this is agnostic of the theme. It's important to understand ki kaun se trends hai jo surface embellishments, whether it's traditional or new, that are important to the season. Especially given the festive season, there is a variety, there's a whole host, about 8 or 10 different
embellishments that we have predicted for the season that can help sort of build your collection and enhance it, and have something new to offer to the consumer than what has been continuing to do so. जैसे हमारी कश्मीर से कशीदाकारी very important, अब ये आप traditional style में use कर सकते हो या फिर जैसे दिखा जा रहा है, you can actually use it in a more monotonal style that contemporize it, or you just use it only on the yoke or just as a detail on the garment. Or the tilla embroidery, a very interesting replacement to the classical zari embroidery, where you look at the cruel work of using silk threads in very interesting manners, looking at extended yokes and the kind of treatments you can build on this. So ऐसे और भी बहुत सारे surface embellishments है festive winter में, हम बस आप सबके लिए एक थोड़ा glimpse दे रहे हैं. Similarly, we also look at providing a note on fabrics. So अभी fabrics and surfaces में हम of course पूरा universe नहीं देखते हैं, because every business has its own fabric library, अपने fabric library होते हैं जो अपने price positioning के मुताबिक आप बनाते हो and आप adopt करते हैं. What we do is we focus on the conversation that is building around fabrics, जो चर्चा बन रहा है amongst the designer fraternity and everybody else, right? And that's important to the season. फिर आपको समझ आएंगे कि आपके मुताबिक आप कैसे adopt कर सकते हो, whether it's the kind of textures, whether it is should I do more crepe versus doing just plain weaves. It is to understand what are the more important nuances for the season that becomes unique to the season itself. So जैसे for example, for festive winter, and especially for the early part of festive winter, one of the key fabrics that is coming into trend is the cotton jacquard. मगर ये वो typical, floral patterned वाले jacquards नहीं है. These are jacquards that are actually mimicking nature. That is, so this comes back to the same sentiment of wanting the concept of stability. So it's very structured fabric, or to the sentiment of wanting something that is real, that one can touch, one can feel. Right? So it comes back to that concept of real or vastavik associations itself. Right? So cotton jacquards being very important, whether it's a honeycomb structure or whether it's the abstract textures that you're seeing here. So ऐसे आपको कई तरीके के both surface embellishments के ideas मिलते हैं और एक note मिलता है कि कौन से fabrics important है season के लिए या फिर कौन से weaves important है season के लिए, so that you can choose to adopt it the way you would like to for your brand. Last but not the least, we cover the details and silhouettes as well. Very important, it sort of completes the entire season's forecast itself. और यहाँ पे हम पहले एक background भी देते हैं कि क्यों ऐसे details trend में आ रहे हैं. What is the basis for these silhouettes becoming important to the season, or where are they coming from? What is the basis that they sort of influencing? What are the sentiments that are driving these silhouettes to come into trend? So for example, folk yoke, I'm sure a lot of you all have already started noticing a lot of focus on the yoke area, a lot of embellishment on the yoke area, and it's now getting even further, enhanced by the various kind of shapes, the various kind of lengths, the multimedia treatments in the embellishments that's building to the whole thing as well. On a side note, all the specs that you're seeing, the black and white flat sketches that you're seeing, are again royalty-free specs that have been created by Itch, and it's available to you all in a complete library. Again, आपको ये EPS और PDF में मिल जाएंगे ताकि कोई भी सॉफ्टवेयर में खुल जाएगा और आप तुरंत ऐसे ही यूज कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत एडिट करके अपने कलेक्शन में इमीडिएटली डाल सकते हैं. Or another detail like lapelled collars. One of the key things that are influencing like the silhouettes coming for the season is that as things start returning to normalcy, as people start going back to work, there is going to be a want for a slightly more formal look that is going to be demanded even in ethnic wear. And that's where the Western lapel makes its cut into an ethnic kurta itself in a more unconstructed manner and a softer manner, like you're saying. So still maintain the femininity of the kurta. या फिर जो this type की silhouettes आ रहे हैं festive winter पे, शुरुआत में मैंने बताया था कि the stability, the sentiment of stability is also influencing the kind of constructed silhouettes that are coming in for the season itself, and this is one such of them, which is the corset kurta. It's of course
not a macro trend, but it's a trend that is going to become like a must-have, because it's also where the youth and where the ethnic wear piece is starting to move towards festive winter, where there is more and more evening occasions, more and more formal occasions, and not just traditional occasions that are building amongst the market today. Again, ये सारे specs आपके library में मिल जाएंगे, again in a full digital form, so आप तुरंत ऐसे use कर सकते हैं आप. Or another key trend for the festive winter, which is the triage. So either you can see this as the quad set becoming now a three-piece set, or you see this as the traditional three-piece salwar suit becoming a three-piece quad set in a more contemporary manner. So whether it's a crop top trouser and a jacket, or a kurta salwar with an interesting overpiece, there are various interpretations, and every time we present one of these silhouette trends, we always give you enough ideas on interpretations ताकि आपको पता चले कि किस different types के साथ में आप adopt करके use कर सकते हैं. So like this, you get an entire library of silhouettes, about more than 120 fresh new ideas on silhouettes every year. Again, fully an editable and adoptable library of specs itself that you can build. So the primary report essentially gives you more than 300 pages of trend inspiration. But bas itna nahi hai. We don't end it here. Beyond the primary report, which is what I've just given you all a view of, हम आपको हर 2 महीने we provide to you all 2 to 3 capsule concepts जो हम बताते हैं. The capsule concepts help us explore एक trend को और ज़्यादा explore करने में. This allows us to do so. It helps us expand a certain big trend into more ideas. कि किस तरीके से आप ये trend adopt कर सकते हो. What are the variations you can take a certain idea and build various sort of stylings, various kind of pattern directions, or various kind of treatments. Now, हर एक ये capsule आपको फिर से पूरा एक mood board के साथ, आपके fabric directions के साथ, surface embellishments जो आप adopt कर सकते हो उस trend में, again a pattern library, a motif library, and a fresh spec library is provided. But that's not all. हम ये भी करते हैं कि हर एक capsule को आपको पूरा render करके भी देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये collection कैसे दिखेगा. So that before you go on to decide to adopt it or to expand on it, you will get a sense of what this whole collection looks like for you to build further from it. The second thing the capsules also ensure is कि हम ये continuous research आपको भी मिल जाए. Because हमको जो 365 days की research करते हैं, आपको भी वो benefit मिल जाएंगे. अगर कोई नया trend आ गए तो which we have not covered in the primary report then gets captured in the capsule. It also gives you constantly new ideas that can come in for your month-on-month collections, for your close-to-market collections, for fast fashion. So it allows you to always be on top of the incoming season trends itself. And again, as we said, that all of this is also given a rendered form so that you get a sense कि आपके पूरा collection कैसे दिखे. ये भी सारे prints, सारे specs, सारे motifs आपको पूरा editable form में मिल जाएंगे ताकि आप बहुत आसानी से अपने collection बना सकते हो. और ये आपको 10 capsules मिलते हैं. In every year, you get 10 capsules that comes across as 4 releases in the year. So in spring, summer, you get 5 capsules, and for festive winter, you get another 5 capsules. That allows you, therefore, a full influx of new ideas that come in through the year. And what's more, बहुत आसानी, ये पूरी रिपोर्ट ऐसी बनी हुई है कि बहुत आसान है आपको अडॉप्ट करने में, आपको यूज करने में. And we are going to show you a short video that explains how.
Okay, I hope everybody's enjoyed the presentation so far. I'll have to take it from your screen. Okay, sorry. Okay, so we're making a note of the questions that are coming up. We will be taking them at the end of the presentation. At this stage, we would like to now share with you the way ahead in form of the calendar and the costs. Just give us a minute. Yeah, so winning with Itch Next, what is it that we enable you to do? जैसे आपको अभी दिखाया है, हमारी रिसर्च बहुत डिटेल्ड है, हमारा रिसर्च ना ही डिटेल तो है मगर ईयर राउंड है, हर वक्त हमारी रिसर्च चालू रहती है और आपको हमेशा ये रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी एंड दे विल ऑलवेज कीप यू अपडेटेड, जिसकी वजह से आप हर वक्त जो फ्रेशनेस अपनी कलेक्शन में लाना चाहें आप अपनी मर्जी से ला सकेंगे. डेफिनेटली फ्यूचर ट्रेंड रेडी, क्योंकि हम लोग परखते ही इसको फ्यूचर के लिए है. एंड लाइक वी सेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग डिजाइनर्स के साथ तो काम करते ही हैं मगर हमारा जो व्हाट वी वांट टू डू इज टू मेक श्योर कि सारी टीम्स जो एक कंपनी की हैं, चाहे वो सोर्सिंग हो, डिजाइन हो, मार्केटिंग हो, बाइंग हो, ऑल टुगेदर जो बिजनेस हो वो एक गोल, एक लक्ष्य और एक डायरेक्शन में इकट्ठे आगे चले. And as you saw, we give you a ready library of creative content through the year, enabling speed to market. Just want to give you a glimpse of the kind of calendar that we will follow. हमारी दो, of course, I mean, we also divided it into two major seasons. हमारा भी spring summer है और festive winter है. सीजन की डिवीजन तो ऐसे है, मगर एक सीजन में हम लोग 4 रिलीजेस निकाल रहे हैं. हमारी जो 2 मेगा रिपोर्ट्स आती हैं, दे कम इन 2 पार्ट्स. जो मेगा रिपोर्ट है उसका एक अर्ली इनसाइट की रिपोर्ट आएगी which will just give you a view of the coming season, will give you just a very macro view कि भाई देखो अगले सीजन में ये सब है जो बनने वाला है. मगर जो रिपोर्ट आपको अभी जिसकी ग्लिम्स आपको अनुराधा ने दी थी, दैट वाज पार्ट ऑफ द मेन रिपोर्ट, वो आपको 2 दफा साल में मिलेगी. सो व्हेन यू गॉट द अर्ली इनसाइट रिपोर्ट स्प्रिंग समर में, उसके बाद एक मैक्रो रिपोर्ट आएगी जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स होंगी जो आपको अभी अनुराधा ने दिखाई है. उसके बाद चालू होगा कैप्सूल अपडेट्स का. उसके after release of the macro report, 45 days into that, we will release 3 capsules in the market. Another 45 days later, we'll release another 2 capsules in the market. So round the year, ये हमारी कहानी चालू रहेगी और आपको ये सब कुछ मिलता रहेगा.